Okay, industrial finance. What do you mean by industrial finance? Finance for the industries. Why the industries are requiring finance? हम अच्छे से समझते हैं finance is the life and blood for all the industries. Finance के बिना किसी भी इंडस्ट्री का कोई काम नहीं चल पाता, ये हम जानते हैं. But for the sake of our understanding, as per syllabus, कुछ कंटेंट है जो हमें क्लियर होने चाहिए, उस बेसिस पे उसको डिस्कशन करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे. इंडस्ट्रियल फाइनेंस को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली इंडस्ट्रियल नीड क्या है फाइनेंस की, उस पर बात करते हैं. और जहां तक नीड की बात है, उसमें सबसे पहली बात तो फाइनेंस की नीड होती है किसी भी इंडस्ट्री को टू स्टार्ट ए बिजनेस. इनिशियली टू स्टार्ट ए बिजनेस industrial finance is required. To run the business, industrial finance is required. For research and development, industrial finance is required. During trouble time, when there is problem, again this is finance which helps. Finance is required. When there is a good conditions and the industries want to expansion of the industries, industrial finance is required. And to replace the machinery equipment like that, industrial finance is required. Basically finance की जो जरूरत है, that is at each and every step of industrial activities since starting towards changing. Starting मतलब to start business, to run business, for research and development, for you can say to face the trouble time, and to expand a business as well as and to change the you can say fixed asset or variable asset. Land नहीं परचेज करनी है या मशीनरीज परचेज करनी है, नया रिक्रूटमेंट करना है लेबर को लेके या एम्प्लॉयमेंट को लेके, दैट इज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस इज रिक्वायर्ड नॉर्मली. व्हेन we discuss the types of industrial finance, especially in case of India, there are three types of industrial finance normally: short-term industrial finance, medium-term industrial finance, and long-term industrial finance. As far as short-term is concerned, normally what we consider, it is the less than 1 year. If the industrial finance is required for less than 1 year, it is known as the short-term industrial finance. If it is more than 1 year and less than 5 years, it is normally known as medium-term industrial finance. And if it is more than 5 years, then it is normally the long-term industrial finance. 1 साल, 1 से 5 साल और 5 साल से ज्यादा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इस तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं. इंडस्ट्रियल फाइनेंस आता कहां से है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, किसी भी इंडस्ट्री को फाइनेंस की जरूरत है तो वो कहां कहां पहुंचे, कहां कहां पर जाकर फैसिलिटीज अवेल करे. तो बेसिकली जब उसके सोर्सेस की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस. वन इज नोन एज इंटरनल सोर्सेस, अदर वन इज एक्सटर्नल सोर्सेस. एक्सटर्नल नॉर्मली आप जानते हैं आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट इन सम सेंस यू कैन से. इंटरनल सोर्सेस वो इंटरनल अरेंजमेंट कर ली फाइनेंस का. जहां तक इंटरनल सोर्सेस की बात है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस में कोई जैसे बैड टाइम है या ऐसा कहें किसी और प्रॉब्लम को फेस करना है या मशीनरी को परचेज करना है नई, या ट्रबल टाइम है, कुछ खास प्रॉब्लम है, उसको फेस करने के लिए इंडस्ट्रीज के पास जो सबसे पहला रास्ता है फाइनेंस करने का, दैट इज सेल्फ फाइनेंस. वो अपने फाइनेंस से उसको मीट आउट करे. दैट्स द इंटरनल सोर्सेस फॉर सेल्फ फाइनेंस. सारे खर्चे सेल्फ फाइनेंस से पूरे नहीं होते, अपने खर्चे से पूरे नहीं होते. देयरफॉर दे मे गो फॉर इक्विटी शेयर. Equity share, they may sell some bonds
some shares in the market और उससे कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, उससे वो फाइनेंस कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स। इन द सेम वे इक्विटी शेयर के साथ साथ सेम लॉजिक अप्लाई होता है इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स होल्डर्स और बॉन्ड्स। चाहे बॉन्ड मार्केट में सेल करें, डिवेंचर्स लेके आए, कुल मिला के अपनी इक्विटी को वो मार्केट में सेल करें। जैसे तमाम बैंक्स, तमाम बड़ी कंपनियां, इवन छोटी कंपनियां मार्केट्स और इवन गवर्नमेंट भी मार्केट से लोन परचेज करती है। तो दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। और यहाँ तो हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री भी इस सब काम में इन्वॉल्व होती है, तो इंटरनल लेवल पे लोगों से कैसे पैसा इकट्ठा करें और उससे अपने खर्चों को मीट आउट करें। और उसमें पब्लिक डिपॉजिट भी एक हो सकता है, उसमें बैंक से लोन भी एक हो सकता है। These are the basic internal sources like self-finance, equity shares, bonds, public deposits, loan from banks. Likewise. And there are some external sources. External sources में that is foreign direct investment, बाहर से पैसा कुछ अट्रैक्ट करें, institutional investment, institutions डेवलप की जाए बाहर से पैसा लगाकर, and another source is non-resident investment, NRI investment. तो जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं सेम कंट्री के, तो they can invest. It means when we deal with the proper industrial finance, there are some internal sources of finance, there are some external sources of finance, either that is FDI or institutional finance investment or non-residential investment. It means from that point of view, when some industries in India, they wish to approach for the finances, और ऐसा कहें इस बात को, मेन सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया, उनकी जो मेन सोर्सेस हैं उसकी जब हम थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो देयर आर द सम सोर्सेस लाइक IDBI और यू कैन से ICICI लिमिटेड, SIDBI, IFCI, IIBI and a number of IRBI, SFC is also there. तो ये कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस स्पेसिफिकली सोर्स करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं। इसमें सबसे पहली बात जब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, तो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज IDBI. This bank provides credit and other facilities for industrial development in the country. IDBI provides credit and other facilities for industrial development in the country, and it provides long-term finance for greenfield projects as well as for modernization, expansion, and diversification. For the purpose, various purpose of industries, either the industry has to be modernized, मतलब टेक्नोलॉजी परचेज करनी हो, R&D में पैसा लगाना हो, एक्सपेंशन करना हो, या डाइवर्सिफाई करना हो अपनी इंडस्ट्री को, प्लांट को. For all these purpose, the IDBI, Industrial Development Bank of India, they provide credits, they provide loans and other facilities to different industries. It has structured various products such as equipment finance. अब इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, किस फॉर्म में ये हेल्प करते हैं, किस फॉर्म में क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं, उसको नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में देखते हैं या प्रोडक्ट के फॉर्म में देखते हैं. तो IDBI के भी कई प्रोडक्ट हैं. इक्विपमेंट फाइनेंस के नाम से है, असेट क्रेडिट के नाम से है, कॉर्पोरेट लोन्स के नाम से है, इन ऑर्डर टू diverse needs for its corporate client. जैसे जैसे नीड होती है
उस हिसाब से, चाहे वो कॉर्पोरेट लोन्स के हिसाब से हो या इवन असेट क्रिएशन, असेट क्रेडिट के नाम से हो या फिर इक्विपमेंट फाइनेंस के नाम से हो. इट मींस IDBI provides loans for almost all the industries in terms of their modernization, expansion, and diversification. This is the main source. IDBI is the main source, but this is not the only source. Another source of industrial finance in India is basically ICICI Limited. And you might be knowing the full form of ICICI. This is simply Industrial Credit and Investment Corporation of India. Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited. ICICI Limited. This ICICI Limited played a very facilitating role. It facilitates to the industrial base in consolidating the various sectors of the Indian industry. So different sectors है Indian industry के, that may be, you can say, SSIs, that may be medium industries, or that may be large industries. So different sectors को ये लोन से facilitate करता है ICICI Limited by funding for their mergers and acquisitions. अभी जहां आपने डिस्कस किया IDBI के लिए, वहां आपने बात की मॉडर्नाइजेशन की, एक्सपेंशन की, डाइवर्सिफिकेशन की, मशीन इक्विपमेंट्स की, मशीन फाइनेंस की, इक्विपमेंट फाइनेंस की. जो इंडस्ट्रीज की डिमांड होती है अलग अलग तरह से, उनकी अलग अलग तरह की डिमांड को अलग अलग एंगल से मीट आउट करने के लिए अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल हैं. जहां IDBI एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, या मॉडर्नाइजेशन के लिए, या इक्विपमेंट्स के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, वहीं मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए, मान लिया किसी प्लांट को, किसी फर्म को, किसी इंडस्ट्री को दूसरी फर्म में मर्ज होना है, एक्वायर करना है, एक्विजिशन में जाना है, तो उस केस में जो फैसिलिटी की जरूरत होगी फाइनेंस की, दैट इज नॉर्मली बीइंग प्रोवाइडेड बाय ICICI Limited, that is Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited. This ICICI group's financing and banking operations, both wholesale and retail, have been integrated into a single company effective from May 2002. Basically, since 2002, the ICICI group is financing through banking operations, चाहे वो होलसेल के लिए हो या रिटेल के लिए हो, सिंगल कंपनी इंटीग्रेटेड करते हुए. Basically, the purpose of ICICI loans is to make facility provided for mergers and acquisitions, and this facility is being provided since 2002. Basically, there is another option, another choice, that is SIDB, Small Industrial Development Bank of India. Small Industrial Development Bank of India, SIDB. SIDB offers refinance basically, bill rediscounting lines of credit and resources support mechanism to route assistance to SSI sectors through a network of banks and state level financial institutions. Basically, what the role of SIDB is there in the development of small scale industry, it is undoubtedly too much significant role. It is the basic part of industrial policies, जहाँ पे आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करेंगे कुछ देर में उसके बारे में. तो इन द सेम वे द contribution of SIDB is of great use. It offers refinance. It offers basically, it supports mechanism
और यू कैन से मैकेनिज्म ऑफ रूट असिस्टेंस, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको असिस्टेंट करने का काम बैंक लेवल पे, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, इट मींस हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, वहां से लेकर पूरी प्रोसेस है एक्सपेंशन की, मॉडर्नाइजेशन तक जाके SIDBI provides the loans facilities to all the small and cottage industries especially. This is for that purpose only. It also offers direct finance for meeting specific requirement of SSI sector. तो SSI sector के अंदर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की को भी फुलफिल करने के लिए SIDBI लोन्स प्रोवाइड कराता है. There is another source of industrial finance in India is known as IFCI Limited. IFCI, Industrial Finance Corporation of India. Industrial Finance Corporation of India Limited. This is another source of industrial finance in India. The main financing company, or you can say, for the project, different plant और डिफरेंट प्रोजेक्ट के फाइनेंस के लिए, नए फाइनेंस के लिए, क्योंकि इसके नाम में आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFCI. तो इट्स मेन फाइनेंसिंग कंप्राइजेज ऑफ प्रोजेक्ट्स फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज. बेसिक फाइनेंशियल help either in terms of corporate advice or in terms of financial services or in terms of project finance is being done by IFCI. रिपीट कर रहा हूं, कॉर्पोरेट एडवाइस के एंगल से, फाइनेंशियल सर्विसेज के एंगल से और प्रोजेक्ट्स के फिनांस के एंगल से जो भी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज को, that is being provided by IFCI, that is Industrial Finance Corporation of India Limited. This IFCI provides custodial and investor services. Custodial and investor services, rating and venture capital services through its subsidiaries. There are a number of subsidiaries of IFCIs also and associate companies. Basically, this is a well-structured system of Indian economy, providing finance, you can say, supporting the industrial base, जहाँ पर heavy industry के लिए भी system है, small scale and cottage industry के लिए भी system है, mergers and acquisitions के लिए भी व्यवस्था ICICI देख रहा है, और जहाँ तक बात डायरेक्ट फाइनेंस की है, चाहे वो एक्सपेंशन के लिए हो या डाइवर्सिफिकेशन के लिए हो, वो IDBI देख रहा है. Another source after IFCI is the IIBI. IIBI Limited. It is Industrial Investment Bank of India Limited. Industrial Investment Bank of India, IIBI Limited. In the Industrial Investment Bank of India Limited. This bank offers a variety of financial products. IIBI. It offers a variety of industrial finance or financial products such as project finance, short duration non-project, asset-backed finance, and working capital and other short-term loans to companies. So basically, working capital के लिए, short-term loans के लिए, non-project के लिए. It means project is already there, but to overcome the problems coming in the project, तो short duration loans हैं, वो ये प्रोवाइड कराता है, और प्रोजेक्ट की फाइनेंस के लिए भी प्रोवाइड कराता है, नए प्रोजेक्ट के लिए भी. तो बेसिकली what IIBI is working, it is working
in the area of, you can say, providing loans, short-term loans for working capital, project finance, and non-project finance. This is basically the role of IIBI, Investment Bank of India. Likewise, there is another source of industrial finance in India known as IDFC Limited. IDFC Limited means Infrastructure Development Finance Company Limited. Infrastructure Development Finance Company Limited, IDFC Limited. This IDFC Limited was incorporated in 1997, and it was conceived as specific institution to facilitate the flow of private finance to commercially viable infrastructure project. जो प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल हैं, क्योंकि इसका कंसर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से है, तो ये वायबिलिटी देखता है. वायबिलिटी मीन्स द यूटिलिटी मस्ट बी हायर देन द कॉस्ट. ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट ज्यादा है और उसका जो यूटिलिटी है वो कम हो. तो इफ द प्रोजेक्ट इज वायबल, then this IDFC provides facilities in terms of finance to all type of industries for their innovative products and processes. तो इसका साफ मतलब है. तो स्टार्टिंग टू लास्ट, स्टार्ट करने से लेकर लास्ट तक के लिए डिफरेंट फेजेस में ये अपना फाइनेंस प्रोवाइड कराता है. This is another source of industrial finance in India is known as IRBI. IRBI is nothing but simply Industrial Reconstruction Bank of India. IRBI, Industrial Reconstruction Bank of India का जो मेन एम है, that is to revive sick industries and make them able to exist and complete in market by assistance. तो सिक इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए, सिक इंडस्ट्री को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए दिस IRBI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इट वर्क्स. Therefore, for that point of view, to make the sick industries healthy, this IRBI is working. Another source of industrial finance in India is known as SFCs. SFCs means simply the state financial corporations. These state financial corporations provides loans to need industries. They also promote shares and debentures. क्योंकि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस इसके नाम में जुड़ा हुआ है. They also promote shares and debentures. If required, they would provide guarantee for loans of third parties. Apart from these, through foreign investment, IPOs, these industries also get financial assistance. Basically, what SFC is involved in, it is involved in to provide finances to the industries, various industries, especially, and purchasing loan for itself through shares and debentures from the market. Therefore, these are the basic, you can say, sources for industrial finance in India, either that is IDBI or ICICI Limited, should be IFCI, IIBI, IDFC, IRBI, SFC. And these are the normal industrial finance facilities that may be provided to the different type of industrial basis in India, that may be small scale industry or medium scale industry, or even in some cases large scale industry. These are the internal sources. These all are the internal sources. When we just move from internal sources to external sources, the first one is आप देख चुके हैं, that is
foreign direct investment. When we observe the foreign direct investment, we all are aware, it is not a loan. It is a facility as per the policy of the government, especially after 1991, or you can say after globalization, when government adopted the new economic reforms, not only in case of India, but across the world. Foreign direct investment के थ्रू जो मेजर इंडस्ट्री है, जो हैवी इंडस्ट्री है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कई बार निकलता है. तो दिस may also be a tool for external sources of industrial finance. Basically, it is not a tool for industrial finance. क्योंकि जो इंडस्ट्री, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्री से सपोज इंडिया में आता है, तो यहाँ उसका पर्पस फिनेंस करने का नहीं है, उसका पर्पस तो दैट इज प्रॉफिट मोटिव. बट it may also be termed as the external sources of industrial finance. इसका बड़ा बेसिक रीजन है, वो ये है कि वो ना केवल फाइनेंस लेकर आते हैं, मैनेजरियल स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी साथ में आता है. इट्स ए पैकेज. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन सेल्फ पैकेज. Along with FDI, there is another term known as institutional investment. Like you can say foreign institutional investment, FIIs. FIIs means foreign institutional investment means the investment coming from foreign country, not directly to the industries, but to the share market. It means institutions may invest करके भी industries को finance हो सकता है. That is simply known as the foreign institutional investment. And the another external source of investment, what we learn, that is non-resident investment, or you can say investment done by non-resident persons. In case of India, you can say non-resident Indians. They may also provide finance to the industrial base, that may be small scale, medium scale, or large scale in India itself. This is the general understanding of industrial finance, what we should be having with us. Industrial finance के साथ साथ अब जो डिस्कस हमने कुछ कॉन्सेप्ट का मीनिंग जो इंटरनल सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया. इन इंटरनल सोर्सेस के बारे में आप जैसे सिडबी है, ICICI लिमिटेड है, या कोई और इंटरनल सोर्स है, तो उसके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन from the point of view of the exam as well as from the point of view of the competitive exams, आपको जो जरूरत है वो यह है, what are the major internal sources as well as external sources of industrial finance. और इंटरनल सोर्सेस पर एम्फेसिस करना होता है ज्यादा, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेस तो लिमिटेड होते हैं. तो इंटरनल सोर्सेस में कौन कौन सी संस्था किस किस प्रकार से फाइनेंस को, इंडस्ट्रियल फाइनेंस को सपोर्ट करती है, दैट हैज टू बी अंडरस्टैंड. तो अब अपने आप को प्रिपेयर उस एंगल से करेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट करने का प्लान है, दैट इज जो एज पर योर सिलेबस, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया. अब स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताएं आप लोग. तो आइडिया है विच इंडस्ट्री इज नोन एज स्मॉल इंडस्ट्री, विच इंडस्ट्री में बी नोन एज कॉटेज इंडस्ट्री, कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं? थोड़ा सा पढ़ा तो है आप लोगों ने, कोई एक स्टूडेंट अगर बता पाए तो. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है?
कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी, कैसे क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सा आइडिया बताओगे? नहीं बताओगे? चलिए जी, बेसिकली आपको हल्का सा आइडिया है? सर जो इंडस्ट्रीज लाइक जो होम रन होती है या घर में हम चला लेते हैं छोटी छोटी, जिनका रिवेन्यू लाइक 1 करोड़ to 5 करोड़ होता है, फिर उनको शायद उनको हम बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज। फिर मीडियम भी आ जाती है जिनका 10 to 50 करोड़ का रिवेन्यू होता है। नहीं, कॉन्सेप्ट यही है, बाकी आप एक शायद सब लगा दिया इसलिए काम पूरा करना पड़ेगा ना, बाकी बात ठीक है आपकी। ऑलमोस्ट छोटी इंडस्ट्री है उसको कॉटेज में बोल देते हैं, फिर स्मॉल में आ जाती हैं, फिर मीडियम में आ जाती हैं, फिर लार्ज में आ जाती हैं, है तो यही। लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको उस हिसाब से देखते हैं। करोड़ में होगा सर? स्मॉल इंडस्ट्रीज का 1 से 5 करोड़ तक होगा रिवेन्यू? बताते हैं बेटा, यही तो काम है, स्टार्ट करते हैं ना। अभी इसको जब इसको स्टार्ट करते हैं तो फिर इसको स्टेप टू स्टेप चलते हैं। देखिए बेसिकली जो 1949-50 में फाइनेंस कमीशन बना, वहां से ये कॉन्सेप्ट की डेफिनेशनल पार्ट स्टार्ट हुए 1949-50 के फाइनेंस कमीशन से। वहां एक क्लासिफाई किया गया, इनमें अंतर किया गया। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑपरेटेड विद 10 to 50 लेबर्स, जिसमें 10 से 50 मजदूर काम कर रहे हों, उसको स्मॉल स्केल कंपनी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा गया। 49-50 की बात कर रहे हैं। 1949-50 में as per finance commission, if the number of laborers is 10 to 50, it is known as small scale industry. As far as cottage industry is concerned, a cottage industry operated with the help of family members as whole time or part time occupation. अगर घर के परिवार के लोग ही काम चला रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री को लेकर, किसी एक्टिविटी को लेकर, then it is known as the cottage industry. A small scale industry highly located in urban areas. Cottage industry is highly located in rural areas. ये पूरी बातचीत जो है that is on the basis of the Finance Commission of 1949-50. Small scale industries classify into 2 categories. अगर केवल हम स्मॉल स्केल की बात करें तो वो 2 तरह से उसको क्लासिफाई करते हैं। Number 1, traditional small scale industries. Number 2, modern small scale industry. तो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, they make use of traditional method of production, handicraft with help high skill workmanship. बेसिकली जहां बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता, मैनुअल लेबर काम करती है, that is the traditional small scale industries. Likewise, there is another classification of this small scale, that is modern small scale industries. In this type of industries, modern technology like different technological aspects, it means the products which are based on modern technology, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, तो अगर इंडस्ट्री उस तरह की है तो उसको सिंपली मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में लाया जाता है। जहां तक एसएसआई की बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को दिया गया था जब आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे थे, स्पेशली द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977 क्लासिफाइड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आप जानते हैं, एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एंसिलरी इंडस्ट्रीज एंड टाइनी यूनिट्स यू कैन से। एंसिलरी को सब्सिडियरी भी कहा गया था, ये भी आपको शायद याद होगा उस समय पे जब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को डिस्कस किया था। स्पेशली
इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन किया गया पिछले क्लासिफिकेशन के बाद, फाइनेंस कमीशन 4950 के बाद अब जो नया बताया जा रहा है एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। तो यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से किया गया, एंसिलियरी इंडस्ट्री के नाम से किया गया, इनको सब्सिडियरी भी कहा गया, और साथ ही साथ टाइनी यूनिट्स के नाम से इनका क्लासिफिकेशन किया गया। इसी एज पर दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 जो क्लासिफिकेशन हुआ, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जैसा अभी बात आई कि करोड़ में है कितने में है, वो क्लासिफिकेशन को अगर स्पेसिफाई करें, दोज यूनिट्स हैविंग द इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन ₹10 lakh नोन एज SSI। किस हिसाब से है? एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1977, those units having the investment not more than ₹10 lakh, 10 लाख से कम है, known as SSI, small scale industries। लेकिन if this amount is increased to 15 lakh, इसको ऐसा कहें कि those units having the investment not more than 15 lakh known as ancillary industries। In case of ancillary industries ये 15 लाख था, in case of SSI ये 10 लाख था। 10 लाख का मतलब 10 लाख या उससे कम, ancillary का मतलब 15 लाख और 10 लाख के बीच में। Likewise, those units having the investment not more than ₹1 lakh only, 1 लाख से कम वाली जो यूनिट्स थी उनको टाइनी यूनिट्स कहा गया। अब ये जो क्लासिफिकेशन था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1977 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से था 10 लाख, 15 लाख, 1 लाख, 10 लाख SSI, 15 लाख एंसिलरीज और 1 lakh टाइनी यूनिट्स। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इन 1997, आगे बढ़े, आफ्टर the period of time in 1997, the investment limit for SSI and ancillary and tiny units was raised। तो कब बढ़ी? 1997 में ये बढ़ी, तीनों की, SSI, ancillary and tiny units, तीनों की लिमिट बढ़ा दी गई। तो बढ़कर कितनी हुई? इन केस ऑफ in case of SSI and ancillary, it was ₹3 crore, and in case of tiny units, it was ₹25 lakh. It means in case of SSI and ancillary, it was 3 crore, 3 करोड़ तय किया गया SSI और ancillary के लिए, और tiny units के लिए ये 25 लाख तय किया गया 1997 में, 77 के बाद। जहां तक स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया बेसिकली दिस सेक्टर इज हैविंग द डायरेक्ट रिलेशन विद द एम्प्लॉयमेंट। SSI, आप ये भी समझते हैं कि जब हम एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करते हैं तो इन इंडियन इकोनॉमी स्पेशली द टोटल एम्प्लॉयमेंट जो सैलरी बेस्ड है, वेज बेस्ड नहीं, सैलरी बेस्ड है, जिसको हम कई बार गवर्नमेंट जॉब्स भी बोल देते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अराउंड 9 to 10% of the total employment. So around 90% of the employment is coming from unorganized sector. In India, करीब 90% के आसपास का जो रोजगार का स्तर है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आता है, and this is the area of small scale industries which is being holded by unorganized sector.
तो छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही हिस्सा है। तो पहला इंपॉर्टेंस जो अगर हम बात करें एसएसआई की, दैट इज इट प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट। द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन labor. All the SSIs, they are based on labor, or you can say labor related activities. Therefore, they are the main source of employment in India. More output with less investment. We all are aware that SSIs are normally labor intensive. Because these are labor intensive and these requirement of labor can be changed as per market demand. आज कितनी लेबर की जरूरत है, कल कितनी लेबर की जरूरत है, तो लेबर इंटेंसिव होने के नाते इन्वेस्टमेंट कम है और आउटपुट ज्यादा है। तो जो इम्पोर्टेंस है एसएसआई की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, दैट इज ऑफ ग्रेट यूज स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स अर्निंग। Exports product like handicrafts, embroidery, handloom, there are a number of products provided by SSIs. They are being exported from India. A data which can be quoted here simply that around 30% earning, 30% export earning based on these industries. तो 30% जो टोटल इंडिया की एक्सपोर्ट की अर्निंग है, एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होती है इंडियन इकोनॉमी को, उसका अराउंड 30% वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू एक्सपोर्ट होने से होती है। इट मींस अभी मैंने जहां ये बात कही कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिप्रेजेंट्स अराउंड 90%, उसका एक बड़ा हिस्सा अभी आपने देखा लास्ट ईयर, इवन दिस ईयर आल्सो, कोविड कंडीशंस में गवर्नमेंट का जो मेन एम्फेसिस था दैट वाज फॉर सेल्फ रिलायंट। और सेल्फ रिलायंट का सीधा संबंध एसएसआई से है या एमएसएमई से है, जिसकी डेफिनेशनल चेंज होने के बाद एमएसएमई से आज की डेट में कह रहे हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, दिस इज द की ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिकॉज it plays a key role for providing the employment to the labor, because being labor intensive. और साथ साथ जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं कि 30% के आसपास को जो एक्सपोर्ट्स अर्निंग है वो गवर्नमेंट को एसएसआई से जो कमोडिटी एक्सपोर्ट होती है उनसे होती है। साथ ही साथ इन इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब स्टार्ट होने के बाद प्रॉफिट अर्न करने का के बीच का जो टाइम है। मान लिया आज कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट की, अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री आज स्टार्ट की तो ये हो सकता है कि उसका पहला प्रॉफिट 2 साल बाद या 3 साल बाद आए, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। But in case of small scale industries, the gestation period is very low. बहुत कम समय में ये स्टार्ट हो जाती है और प्रॉफिट अर्ली टाइम में ही आना स्टार्ट होता है बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है ये। साथ ही साथ एक बात और यहाँ कह सकते हैं इसके लिए, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एंड मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। In terms of decentralized economy, it means simply the power of economy, if it is centralized into some pockets, then it will not work in the interest of the general audience, general public. Basically that आप पढ़ चुके हैं, in the name of, आपने देखा है concentration of economic power के नाम से आपने पढ़ा है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है, तो डिसेंट्रलाइजेशन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये लगभग सिनोनियम्स टाइप के हैं। तो जितना पब्लिक के बीच में डिसेंट्रलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज के बेनिफिट्स का, इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग का, दैट विल
increase the distribution of income more evenly. और अगर distribution of income uneven हुआ, that is again the problem to the economy, जो हम देख चुके हैं, आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ते समय उसे ऑब्जर्व किया है. साथ साथ with the help of small scale industries, regional growth is also balanced. When we say regional growth is balanced, it means simply केवल कुछ पॉकेट वाइज ग्रोथ ही नहीं होती. अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू एसएसआई का डेवलपमेंट होता है तो almost all the regions where labor is available, labor intensive SSIs are in process, then the regional growth is being adopted. और regional growth किसी भी इकोनॉमी के लिए कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर से कहीं ज्यादा बेटर पोजीशन होती है, और जिसकी वजह से तमाम कमिटीज बनी. आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ते समय देखा उसको, और उन कमिटीज ने जो रिकमेंडेशंस दी वो यही दी कि हाउ टू डिसमेंटल दिस कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. देयरफॉर दिस प्रोसेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दिस प्रोसेस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इज हेल्पफुल फॉर बैलेंसिंग द रीजनल ग्रोथ ऑफ the economy. At the same time, the social cost is also saved. When we say social cost, like infrastructure, road, power supply, housing provision for drinking water, healthcare, education facilities, when SSIs are in use, small scale छोटे छोटे उद्योग जब डेवलप हो रहे हैं, तो उस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, पावर सप्लाई को लेकर, हाउसिंग को लेकर, साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर या हेल्थ केयर को लेकर, एजुकेशन फैसिलिटीज को लेकर, ये सोशल कॉस्ट की बचत होती है. अदरवाइज ये सोशल कॉस्ट पर जो इन्वेस्टमेंट आता है वो बहुत कॉस्टली होगा. तो सोशल कॉस्ट इज आल्सो बीइंग सेव्ड हियर. यूज ऑफ लोकली अवेलेबल इनपुट्स, एक और जो एसएसआई के लिए खास बिंदु होता है, दैट इज जो लोकली अवेलेबल इनपुट्स होते हैं उनका प्रॉपर यूज भी हो जाता है. अदरवाइज लोकली अवेलेबल इनपुट्स का यूज नहीं हो पाता, एक्चुअली प्रॉपरली यूज नहीं हो पाता. लाइक द यूज ऑफ लैंड, फॉरेस्ट, एनिमल वेस्ट, जो भी इस तरह की चीजें लोकल अवेलेबल हैं, that are being used through SSIs, through cottage industries in a better way in the interest of the economy. और जो आप SSI के साथ साथ सब्सिडियरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, सब्सिडियरी इंडस्ट्री का मतलब एंसिलरीज की बात करते हैं, they also provide semi-finished product to large-scale industries like nut and bolt like that. तो जो SSI से थोड़ी बेटर पोजीशन में है, SSI से थोड़ी सी बेटर पोजीशन में है, एंसिलरी इंडस्ट्री है, सब्सिडियरीज हैं, दे आर मच क्लोजर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो इमीडिएट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने का काम है वो स्मॉल सब्सिडियरीज इंडस्ट्रीज नॉर्मली करती हैं. तो SSI और सब्सिडियरी में बड़ी मार्जिनल सी लाइन है. सब्सिडियरीज आर सम हायर than SSIs, but as per our syllabus we have to be more specific on the problems of small scale industries or the problem of cottage industries in India. ये इससे पहले ये डिस्कशन जरूरी था. As far as problems of SSIs in India is concerned, a major problem the first one is the problems of finance. पहली बात, जब इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल फाइनेंस पढ़ा तो उसको देखकर भी अदरवाइज भी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए. क्योंकि इवन टुडे अराउंड 57-58% वर्कफोर्स lives in agricultural sector. Then they are struggling with the problem of income inequalities, unemployment,
and likewise. These problems are connected with the problem of finance. If unemployment is there, we have the example of Manrega. If the problem of unemployment is there is a problem of finance. अब अगर लोकल लेवल पे गांव का किसान या अर्बन एरिया में कोई एक व्यक्ति स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहता है तो पहला स्टेप है फाइनेंस. जो उसे मिनिमम फाइनेंस चाहिए वो फाइनेंस उसके पास अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वो एसएसआई एस्टैब्लिश करना चाहता है. गवर्नमेंट इज ट्राइंग, but even after a number of efforts, the problem of finance for starting the SSI in India is a major problem. It is a huge problem. This is the first problem. Another problem in this concern is the problem of availability of raw material. If we have to establish SSI in case of if we have to establish the SSI in case of suppose Meerut for sports industry, the raw material may be available. अगर हमें यही स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की छोटी सी SSI डेवलप करनी हो कहीं इंटीरियर में तो वहाँ रॉ मटेरियल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के हिसाब से शायद ना मिल पाए. तो जो अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की है that is due to a number of other connected reasons. This is a major problem of SSI in India. If you wish to, अच्छा ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है. If it is available, it is much costly. जो कॉस्ट है that matters. As per SSI requirement, as per SSI financial conditions, the raw material is not available to that extent. Likewise, there is a problem of marketing. The marketing problem of small scale industry is another serious problem because of branding. If branding is not there, SSI branding means local branding. Local branding is not of that strength as the big vendors or the big branding is in concern due to the competitive environment. So as per this competitive environment, SSIs are much behind. Again, due to the low level of finance, low level of technology is there. When the technology is low, normally what is happening? The quality of the product is low. The quality of the product is low means the marketing, the demand of the product produced by SSI in the market is low. Therefore, they are in the vicious cycle. Again, they have to face the competition from the large scale industries. When they have to face the competition from the large scale industries, and in this competition when they are competing, normally it is not possible to stand in front of the large scale industries because due to the weakness from the point of view of the technology, from the point of view of the finance available. Again, there is a permanent problem of sickness. कल थोड़ी सी बात की थी. अगेन जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो नॉर्मली सिक इंडस्ट्री की फॉर्म में ही बनी रहती हैं, चाहे वो बॉर्न सिक हो या वो बाद में सिक बनी हो. ऐसे ही इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मतलब द लोकेशन वेयर दे आर वर्किंग, वेयर दे आर एस्टैब्लिश्ड एसएसआई. जहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं, नॉर्मली उन लोकेशंस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो या इसको आप बोलते हैं कई बार इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, in terms of per capita income, in terms of GDP, in terms of infrastructure and transportation, in terms of air network. So all these facilities are not available to these locations where these SSIs are established. So these are the basic problems. और कुछ केसेस में
तो वो कमोडिटी जो कमोडिटी ये प्रोड्यूस करते हैं एसएसआई, दीज कमोडिटीज आर फेस्ड कंपटीशंस फ्रॉम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब एमएनसी के साथ अगर इनकी कमोडिटी जो प्रोड्यूस की जाती है उसका कंपटीशन होगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू सर्वाइव। These were the basic issues related to the small scale industries that need to be concerned. और हमें अपने आप को जो तैयार करना है, प्लानिंग जो प्लानिंग हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, डेफिनेशनल एस्पेक्ट क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है, और उसके साथ साथ इनकी जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में और प्रॉब्लम्स क्या क्या है ये लोग फेस करते हैं, तो वो हमें अपने हिसाब से उसको तैयार कर लेना है। तो जो इससे पहले हमने थोड़ा डिस्कस किया इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में मेन फोकस करना है सोर्सेस पर। सोर्सेस कौन कौन से हैं? Okay, now it's over now. आपकी तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशन हो, कुछ क्वेरीज हो तो बात कर सकते हैं। सर इसकी भी पीपीटी है, मतलब पीपीटी है। हाँ, इसका जो कुछ मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका मटेरियल मैं कुछ आपको आपके जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। सर एग्जाम ओरिएंटेड के एग्जाम में किस टाइप से मतलब क्या चीजें पूछी जा सकती मैं है? आपको बेटा पॉइंटेडली बता रहा हूँ, जो एग्जाम के एंगल से ही मैंने आपसे बात की कि जो प्रॉब्लम्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, उनकी इम्पोर्टेंस है, उनका डेफिनेशनल पार्ट है, ये हमें तैयार करना है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए उनके सोर्सेस को तैयार करना है, इंटरनल सोर्सेस को, एक्सटर्नल सोर्सेस को। ठीक है ना, उस तरह से प्लान करना है। मेरे पास जो मटेरियल है वो आपको मैं जल्दी ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके, कोई और स्टूडेंट? नो।